The city of Uttar Pradesh, Aligarh, also known as the city of locks, has one more speciality. For centuries, Aligarh has remained an epicenter of communal harmony, where Muslim and Hindu communities have been living amicably and fostered a bond even stronger than the Aligarh locks. Both the communities celebrate all the festivals of India with much fervour and gaiety. As the Hindu festival of Kanwar yatra has begun, artisans of Hindu and Muslim communities are busy manufacturing small bells and ghunghroos to embellish the Kanwars. Let's take a look at how both the communities work together to manufacture the best quality decorative ornaments for Kanwar yatra. Lakhs of devout pilgrims in the northern states of India are ready to embark upon a barefoot journey to the holy river Ganga. During the Hindu calendar month of Shravan, the devotees of Lord Shiva collect pious waters of the river in their Kanwars and offer it to Shiva temples in their locality. Kanwar is basically a bamboo pole with earthen pots or containers suspended on either ends. The pilgrims, who are called Kanwariyas, carry these Kanwars on their shoulders during the journey to collect the river water and head back to their place. The pilgrims stop at several locations during their course, and the people of different religious communities arrange for their food, stay, and other needs during the travel. As the month of Shravan begins, both Hindu and Muslim artisans in a lock manufacturing industry in Aligarh are busy making decorative accessories such as bells, trinkets, and other ornamental items. There is a great significance of these decorative accessories as the pilgrims use these small bells and trinkets to embellish their Kanwars. तो मैं लगभग 3-4 साल से उद्योग को चला रहा हूँ। पहले ताला हार्डवेयर मेन था हमारा। आज जो है घंटी, घुंघरू, एनिमल ऑर्नामेंट्स का बहुत बड़ा व्यापार हमने कर लिया है। इससे क्या है, जो हमारे पुराने उद्योग में जो कमी थी, कुछ जो मद्दापन था, इससे हमारी पूर्ति हो गई है। और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों का इसमें सहयोग रहता है। सभी लोग मिलजुल के कार्य करते हैं और जो जितने भी मंदिर के शिवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर सभी घंटियां सप्लाई होती हैं। और कांवर का ये श्रृंगार है। कांवर जो भी आदमी करता है वो श्रद्धा के हिसाब से अपना कांवर को सजाता है और प्रेम पूर्वक उसको लेके जाता है और वो अपना सौभाग्य सिंह करता है। क्या आइटम सर? इसमें घंटी, घुंघरू, डांसिंग घुंघरू, बहुत तरह के इसको वो रूप दे देता है, अपने हिसाब से रूप देता है और अपने हिसाब से। सीजन सावन का महीना 1 तारीख से शुरू होने वाला है, तो सभी लोगों ने पहले से ही एडवांस में ऑर्डर दिए हुए हैं, जिससे कि 1 तारीख से उनके पास माल पहुंच जाए और उनका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगे। The jingling of bells on Kanwar not just soothes the mind of pilgrims but provide them a rhythm and spiritual power to continue their journey. Their religious journey, however, satisfies the workers of this industry too, where Hindu and Muslim artisans work day and night to increase the production to meet the demand. मैं घुंघरू बना रहा हूँ। सावन का महीना चल रहा है, कांवरियों को सजाए जाते हैं। जी, कांवर सजाने काम आते हैं घुंघरू। सावन का महीना चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मतलब कार्य हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमें बहुत भाईचारा रहता है, प्यार मोहब्बत बहुत है। जी, बहुत सीजन बढ़िया चल रहा है। इसमें 1500, 1200 जैसा अपने ऊपर काम है, बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। गाड़ी 800-900 पड़ जाती है हमारी। मालिक बहुत बढ़िया है। मैं मुस्लिम हूँ, हमारे मालिक है हिंदू। बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है हमारी फैक्ट्री में। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। To encourage religious amalgamations, people from both communities, Hindu and Muslim, are getting involved in the making of various artistic items from the decoration of Kanwars. The industry is garnering a lot of popularity for their good quality Kanwar ornaments and the friendships that have fostered among the artists of this industry. Among the many such examples of coexistence of different religious communities in Aligarh, this industry too is setting up a precedent of communal harmony in the culturally diverse society of India.